Hello everyone, I hope you are fit and fine. Since last two lectures, we have been discussing about the lesson Into the Wild, which was written by Kiran Purandare. This extract was taken from his famous book Sakha Nagzira. In this particular book, he had shared his own experience that how he exactly lived in the forest of the Nagzira. So without wasting the time, let's see the climax of this first part of Into the Wild. So अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, please to subscribe our channel for new and innovative learning of English language. So let's see that what happened with Kiran Purandare when he was lost in the jungle. So let's see, it was more than an hour and I was still there searching for a suitable place or suitable tree to climb and get secured. So now remember Kiran Purandare जो कि वो जंगल में पूरी तरह से फंस गए हैं and now he don't know exactly that which trail or which path is exactly correct, and in this darkness it is impossible to think about the right path. अंधेरे में रास्ता ढूंढना ये बहुत मुश्किल काम है उनके लिए. And now he is thinking about to climb on the tree to secure his life, because in this forest if he is walking on the land, so it is very difficult for him to survive. So now Kiran Purandare is thinking about to climb on the tree to secure the place for him, and of course he would like to save his own life as well. So let's see what happened with him. So turn back to the trail you left, my mind was telling me. So of course when we are afraid, जब भी हम कभी डरे हुए होते हैं तो उस वक्त बुरे ख्याल हमेशा हमारे दिमाग में आते रहते हैं. The same thing is happened with the Kiran Purandare. Now he is thinking about the trail which he had just skipped, but now his mind is again and again telling him that this was, or what he said, that turn back to the trail you left. जो रास्ता उन्होंने छोड़ा था उसी रास्ते की तरफ बढ़े, ऐसा माइंड उन्हें कह रहा है. But of course remember that what he thinks, let's see, that I had no other way to climb the hillock before me. So after thinking a lot, he decided to climb the hillock. Hillock means small hills were there. Now he decided to climb over it. यानी उन्होंने डिसाइड किया कि छोटे छोटे जो हिल्स हैं तो उनको पार करते हुए वो आगे बढ़ेंगे. So this is his strategy to reach to the village Pitzeri. But let's see in what way he reached to the Pitzeri. Of course this is not the simple way to reach to the Pitzeri now in this darkness. So I had no other way to climb the hillock before me. There were more hillocks. वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पर्वत हैं, बहुत सारे छोटे छोटे hills हैं, and some more around the one I was standing. And of course in this particular condition, in this scenario, to find the right path, this is very difficult task for him. अभी वो सोच रहे हैं कि एक एक हिल पार करते हुए वो आगे बढ़ेंगे, बट ऑफ कोर्स उनके सामने बहुत सारे हिल्स हैं और उन हिल्स को पार करने के बाद ही उन्हें कुछ रास्ता दिखाई दे सकता है. एंड नाउ लेट्स सी व्हिच डिसीजन ही हैड टेकन. सो नियर माय फीट वेयर द ड्राइड अप ड्रॉपिंग्स of sloth bear. Sloth bear, this is a kind of the bear which is very dangerous, and in his or under his feet, near the feet, he found the dried up droppings of sloth bear. The sloth bear of Umbarzara must be out in open sniffing for food. तो शायद कोई ये जो बेयर है वो शायद, बेयर का मतलब भालू, सो ये भालू है वो शायद आसपास कहीं मंडरा रहा है, यानी खाने की चाह में ये जो भालू है वो बहुत दूर तक निकल आते हैं. एंड ऑफ कोर्स नाउ ही हैज द डिफरेंट डेंजर बिकॉज नाउ ही फाउंड द ड्रॉपिंग्स ऑफ द स्लॉथ बेयर नियर हिज pit. I cautioned myself, so he gave again and again the cautious instructions to himself. उन्हें डर भी लग रहा है लेकिन उन्हें किसी भी तरह से उस गांव तक पहुंचना है. अगर वो गांव तक अच्छी तरह से पहुंच गए तो ही वो अपनी जान बचा सकते हैं. बिकॉज इन दिस फॉरेस्ट
to survive is a challenging task, and this challenging task he needs to accept now. So he cautioned himself again and again, thinking of avoiding all sorts of eventualities. Eventuality, whatever the dangers he is thinking about, यानी जो भी डेंजर्स वो अभी सोच रहे हैं कि इस रात अगर उन्हें रास्ता नहीं मिला या फिर वो भटक गए तो किस तरह के या कई तरह के जो प्रॉब्लम्स है उन्हें आ सकते हैं, कई सारी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है. एंड नाउ ही इज थिंकिंग अबाउट द इवेंचुअलिटीज. सो ही अवॉइडिंग ऑल द थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग फ्रॉम हिज माइंड. अवॉइडिंग का मतलब होता है नेगेटिव थॉट्स जो उनके माइंड में आ रहे हैं वो उन्हें हटा के आगे बढ़ने की सोच रहे हैं. सो ही इज टेकिंग ऑल द स्टेप्स इन अ पॉजिटिव वे. एंड नाउ व्हाट ही डिड, लेट्स सी. आई मेड ए मूव. उसी वक्त उन्होंने सोचा कि कुछ भी हो जाए लेकिन यहाँ पे रुकना नहीं है और वो आगे बढ़े. ही वॉज मूविंग अहेड. आई रैन डाउन द हिलॉक दैट आई हैड क्लाइम्ड अप एट ए फ्रैंटिक स्पीड. जिस छोटे से हिल पे वो चढ़े थे उस हिल से वो जितना तेजी से भाग सकते थे उतना तेजी से वो नीचे भाग के उतरने लगे. इन अ फ्रैंटिक स्पीड, फ्रैंटिक मीन्स इन हरीड मैनर, इन एक्साइटेड मैनर. he is moving now because he is in danger now, because he found all the things which are so dangerous, and so he climbed down from that hillock with a frantic speed. The west was to my right hand side now. So the west side is on his right hand side now, and the evening breeze flew through my wet curled hair. जब वो उतर रहे थे तो जो पश्चिम साइड है तो वो उनके कौन से हाथ पे थी, उनके दाहिने हाथ पे थी. एंड ऑफ कोर्स नाउ रिमेंबर द इवनिंग ब्रीज, इट मीन्स व्हेन ही इज गोइंग विथ ए फ्रैंटिक स्पीड. जो हवा वहां पे बह रही थी तो उसकी वजह से उनके जो कर्ली हेयर्स थे जो कि पसीने से भीग गए थे. एंड ऑफ कोर्स व्हेन द पर्सन इज इन डेंजर, व्हेन द पर्सन इज अफ्रेड, दैट टाइम पसीना निकल ही आता है. एंड दैट टाइम द पर्सन is trying his level best to overcome the situation. The same way is applicable to Kiran Purandare now, because he would like to overcome this danger now. So my stomach was aching. So उनके पेट में भी दर्द होने लगा और उसी वक्त वो सोच रही कि कुछ अच्छा हो जाए. I kept walking in hope. Of course, hope is the only solution on each and every problem. So now he is in hope कि उन्हें शायद अच्छा रास्ता मिल जाए या फिर सही रास्ता मिल जाए और वो उस गांव तक पहुंच सके. आफ्टर अराउंड 50 स्टेप्स आई फाउंड ए ब्राइट रेड सॉइल ट्रेल. सो 50 स्टेप्स चलने के बाद में, कुछ आगे बढ़ने के बाद में उन्हें एक छोटा सा रास्ता मिला. ही फाउंड वन ऑफ द ट्रेल एंड दिस ट्रेल इज ऑफ रेड सॉइल. यानी वहां पे लाल मिट्टी की वो जो रास्ता था वो लाल मिट्टी से बना हुआ था. So he was now a little bit relaxed because I found my silver lining on this trail. Silver lining, what is, let's see the margin question here. That is, what is called silver lining of the trail by the writer and why? Of course, the silver lining means here it's clearly indicating the hope, positive sign for the Kiran Purandare, because this is the road which was made by the people. And why people made the road? Because if we have the bush, if we have the forest around our village, so we made the roads to go into the forest. So of course this is one of the good kind of the sign for the Kiran Purandare now. So उनके माइंड में होप जग गई, उन्हें लगा कि वो सही रास्ते पे हैं. There were marks of bicycle wheel on this trail. उसी रास्ते पे उन्हें कुछ साइकिल जो वहां पर से गुजरे थे उनके जो निशान थे वो उन्हें उस रास्ते पे मिले. एंड दिस इज वन ऑफ द गुड साइन फॉर द किरण पुरंदरे. दैट वाज ए बिग कंसोलेशन फॉर मी. कंसोलेशन उनके लिए एक राहत की सांस थी या फिर एक ऐसी होप थी. उन्हें लगा दैट ही वाज ऑन द राइट ट्रैक. देयर मस्ट बी अ विलेज नियर बाय. वो सोचने लगी कि गांव अभी पास या नजदीक है और कुछ ही देर में वो गांव में पहुंच जाएंगे. आई रीअश्योर्ड माई सेल्फ. वो फिर से एक बार खुद को समझाने लगे. बिकॉज whenever we are in trouble, whenever we are in critical condition, that time we need to give the instruction to ourselves. And if we are giving the negative instruction,
bad impact will be happen to the body. So ऐसे वक्त में आपको डरना नहीं चाहिए। किरण पुरंदरे जैसा आपको पॉजिटिव तरीके से आपको सोचना चाहिए। सो यू कैन रीच टू योर डेस्टिनेशन। सो देयर मस्ट बी अ विलेज नियर बाय, ही थॉट, एंड ही रीअश्योर्ड दिस पर्टिकुलर थिंग टू हिमसेल्फ। एंड आफ्टर दैट मोर क्वेश्चंस रीसर्फेस्ड। कुछ और क्वेश्चंस उनके माइंड में आने लगे। हाउ फार इज द विलेज, यानी गांव जो है वो कितना दूर होगा, एंड वेयर, यानी किस रास्ते से जाने पर वो जल्दी से जल्दी गांव में पहुंच सकते हैं। इन विच डायरेक्शन नाउ, अभी उन्हें सोचना था कि कौन सी डायरेक्शन में जाए, बिकॉज दैट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क इन द डार्कनेस टू गो टू द राइट डायरेक्शन। सही मायने में सही दिशा में जाना बहुत जरूरी होता है। एंड ऑफ कोर्स हियर ही हैज द क्वेश्चंस इन हिज माइंड। सो आई क्लाइम्ड वन मोर हिलॉक। तो आगे बढ़ के वो और एक हिल उन्होंने पार की। एंड ट्राई टू लोकेट साइंस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। और वो ढूंढने लगे कि आसपास कोई विलेज दिखाई दे रहा है या नहीं, या फिर कोई रोशनी दिखाई दे रही है या नहीं, बिकॉज रोशनी से ही हमें पता चलता है कि कौन सा गांव नजदीक है। माई लेग्स वेर ट्रेमलिंग, सो हीज लेग्स वेर नाउ ट्रेमलिंग। उनके पाँव थरथराने लगे, कपकपाने लगे, ड्यू टू द वॉकिंग, ड्यू टू द एक्सर्शन। एंड एज आई रीच द टॉप ऑफ द हिल, जब वो उस ऊंचाई पे पहुंचे, आई जम्प्ड विद जॉय। सो ही वाज एक्साइटेड, so he was jumped with joy. Why? Because the reason is very clear. I heard the sounds of the people talking in the loudspeaker. So now he heard the noise of the people, those who are speaking on the loudspeaker. तो शायद लाउडस्पीकर गांव में लगाया हुआ है और उस लाउडस्पीकर पे कुछ लोग बोल रहे हैं और उनकी जो आवाज है उनके कानों तक जा रही है। So this is a good sign for him. In a jiffy, here we have one question. In the margin side, guess the meaning of in a jiffy. In a jiffy means in a moment. कुछ ही पल में he was so excited, quickly I ran down. उस पहाड़ से वो नीचे उतरने लगे with joy, because now he is sure that village is near, क्योंकि उनके पास में गांव है। The hill toward the sound with full vigor. So now he is energetic. Now he is with full strength. And now he climbing down that particular hill with rapid speed, with frantic speed. I stumbled and fell down. लेकिन उसी वक्त वो किसी चीज से टकरा जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। He was fell down. Saw droppings of blue bulls nearby. Blue bulls जो नीलगाय होती हैं, बड़े बड़े जो जंगली जो नीलगाय होते हैं, तो उनके ड्रॉपिंग्स उन्हें दिखाई दे दिए। So once again he was in frightened mood and of course struggled, stood up. Once again, जब वो नीचे गिर गए तो फिर से एक बार उन्होंने अपने आप को संभाला और वो खड़े हो गए। और एंड ही स्टूड अप नाउ एंड डिसाइडेड व्हिच डायरेक्शन टू मूव ऑन। तो उन्होंने सोचा कि कौन से डायरेक्शन से जाने से उस गांव तक वो जल्दी पहुंच सकते हैं। सो द साइंस ऑफ civilization were visible now. So now he is very excited. Now he is happy that at last he got the correct way to reach the Pitzeri village. So the tiny sleepy village of Pitzeri was visible through the green woods. तो वहां पर से उन झाड़ियों में से उन्हें वो जो गांव था वो अच्छी तरह से दिखाई दे रहा था। And he was very sure that this village is Pitzeri. The lantern of Rajiram Bhalvi's farm, the loudspeaker installed for Keshav Bhalvi's marriage, all were in clear sight. Why he was sure? Because now he understood that this village in which he would like to reach, this village is this. And of course now the lantern of Rajiram's Bhalvi's farm, यानी उन्हें राजीराम भालवी, one of the person who is the native of that village, उनके फार्म का उन्हें लैंटर्न वहां से दिखाई देने लगा। लैंटर्न, लालटेन, यानी लालटेन की जो रोशनी है वहां से उन्हें दिखाई दे रही थी। एंड द लाउड स्पीकर विच वॉज इंस्टॉल्ड फॉर वन ऑफ द पर्सन्स मैरिज, दिस वॉज द मैरिज ऑफ केशव भालवीज मैरिज, it was installed for that purpose. So all these things are now visible to the Kiran Purandare. So he was very excited, he was very happy. Turn left to the spot the village lake. तो वहां से village lake भी उन्हें दिखाई दे रहा है। जो गांव के नजदीक जो नदी है वो भी उन्हें वहां पर से छोटा सा जो तालाब है वो वहां से उन्हें दिखाई दे रहा है। एंड फैमिलियर हिलॉक, द नेम ऑफ दिस हिलॉक इज सुई हुड़की। Okay, Sui Hudki is the one of the name of the hillock. So the dog barked to welcome me to the village.
जैसे वो गांव के नजदीक पहुंचे तो कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया एंड दिस इज द साइन दैट यू रीच टू द विलेज। द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज टू टेक अ बाथ। गांव में पहुंचने के बाद सबसे पहली चीज उन्होंने क्या की, वो खुद नहाए, बिकॉज ड्यू टू दिस एक्सर्शन ही वॉज टोटली टायर्ड एंड द शेकिंग ऑफ लिम्स हैड लेसन्ड अ बिट। नहाने के बाद में जो उनके लिम्स थे यानी जो उनके पैर वहां पे जो दुख रहे थे तो अभी थोड़ा सा उन्हें हल्का महसूस होने लगा। नाउ द पेन इज डिक्रीज्ड एंड लिम्स हैड लेसन्ड अ बिट। द स्टमक एक स्टार्टेड अगेन, लेकिन फिर भी उनके पेट में जो दर्द था वो बढ़ते रहा या फिर बढ़ने लगा। एट टू द फुल, उन्होंने भरपेट खाना खाया एंड देन स्लम्प्ड ऑन टू द कॉट। स्लम्प्ड मीन्स फेल हेवीली एंड ऑफ कोर्स आफ्टर द एक्सर्शन वी आर आल्सो डन द सेम थिंग, राइट। हम जब भी थक जाते हैं तो थकावट में हम ऐसे ही हमारे कॉट पे सो जाते हैं। द सेम थिंग इज हैपन टू द किरण पुरंदरे एंड ही वाज स्लम्प्ड ऑन टू द कॉट। स्लम्प्ड मीन्स फेल हेवीली। lying awake looking at the star studded sky। जब वो सोए तो वो ऊपर देख रहे थे, नीले आकाश की तरफ देख रहे थे जहां पे तारे जगमगा रहे थे। I spoke to myself, so he spoke to himself and said there still exists a jungle where we can get lost, isn't this our good luck? So he said that अभी भी दुनिया में ऐसे बहुत सारे जंगल हैं जहां पे हम खो सकते हैं। So this is a good luck for us. Of course, remember this is the good luck because nowadays, remember, due to the civilization, due to the rapid environmental changes and due to the industrialization, so many woods were cut down, and due to that, remember, we don't have the forest around us. But still remember, this person is lucky one who spent his life in the forest, because whenever we are living near to nature, that is one of the good life, you can say that this is the ecstasy for the person. जब भी हम नेचर के करीब होते हैं, नेचर में हम हमारा समय बिताते हैं, so that time we are feeling very happy. So this particular extract or the first part was adapted from the famous book of Kiran Purandare, whose title is Sakha Nagzira. I hope now you have understood that in what way you have to survive in the forest. With the experience of the Kiran Purandare, you can take the lessons, you can take the learnings, you can take the moral values from him, and of course it is possible to survive if you have the positive attitude towards the life. So I hope you don't have any kind of the questions now. So thank you everyone for watching my videos. Stay home, stay safe, stay tuned. Thank you everyone.